So let us now discuss the remaining 5 questions of the previous video. So here you are having the question. Just go through this question and try to answer. Let me just read it out to you. On the planet Earth, most of the fresh water exists as ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, the largest portion, इनमें से कौन से areas में the largest portion of the remaining fresh water exists, that you need to find out. So for that, you need to know that how actually the distribution of water is and where you're going to find the maximum amount of water and like fresh water. That all you need to know. So I think to understand it in a better way, you need to know this particular picture. Here you are having this pictorially. This is how the distribution of the water is. When we talk in terms of the total volume of the water that exists on the surface of the earth, you're going to have the maximum in the oceans, and that is roughly about 97% you're having in the oceans. And you already know this ocean water is a salty water, right? So roughly you're having of the total water that exists on the surface of the earth, only roughly about 2.5% of that water is the fresh water, right? And out of that 2.5% fresh water, this is how the distribution is, that you should know. So out of this very small fresh water, maximum amount of water again you are going to have in the form of glaciers and ice caps. Roughly about 70% water जो है वो आपका ice caps, glaciers, for example Antarctica है, Antarctica whole of that region is in the form of like ice, Arctic region or polar areas, and other also, for example hilly areas and all those mountainous areas. So there the maximum amount of fresh water you are going to have, and the remaining of water is like roughly about 30% water is in the form of fresh water is in the form of groundwater. Groundwater मतलब है under the surface of the subsurface water बोल सकते हो आप, under the surface of the earth, right? So उसको हमने नाम दिया ground water, right? So there you're going to have the maximum that is at the second number you're going to have in the form of groundwater. And when we simply talk in terms of the surface of the earth, right, that will be like you're having you're having lakes, you're having like streams, small streams and all that. So that is only very 1.2%, very small. So first, the fresh water is very small on the surface of the earth, and that too fresh water which can be easily utilized, that is again very small. And this fresh water will be in the different form. For example, lakes ki form mein, then your streams ki form mein, ground and permafrost की फॉर्म में, राइट? सो एक्चुअल में जो यूजेस के लिए आपके पास पानी बचेगा सरफेस के ऊपर, वो जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल. इसमें फॉर लेक्स, रिवर्स, सी द अमाउंट ऑफ वाटर दैट यू आर गोइंग टू हैव इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर 0.49, 0.5%, that is very small, right? That is how. So this is the situation of the fresh water that you can have on the surface of the earth. Now if you are having this overall picture of the fresh water, then you can answer it very easily. As you know, the question is that जो मैक्सिमम वाटर है वो ग्लेशियर और आइस कैप्स की फॉर्म में है, दैट इज द फ्रेश वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और उसके बाद जो सबसे ज्यादा वाटर कहां पर है, दैट इज गोइंग टू बी ऑन द ग्राउंड वाटर व्हिच इज रफली अबाउट 30%. सो दैट मींस द आंसर इज गोइंग टू बी द सी, दैट इज द एग्जिस्ट एज ए ग्राउंड वाटर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following is the or are the causes of thermal pollution? So these are the some of the statements given to you. Just try to answer it by pausing. So one is use of water as a coolant, soil erosion, siltation of water bodies, right? So actually the correct answer is going to be all of these three, right? First one is easy to like interpret because most of you know it, that mainly जो thermal pollution नाम किसको दिया गया है, that you already know, that is when you release the water at a higher temperature in a nearby water bodies. So उस केस में the change in temperature आएगी उस water body की, उसको हमने बोल दिया thermal pollution. Because when the thermal pollution, that means you are changing the temperature of that water body, so there are many microorganisms or organisms बोल सकते हो, for example fish हो सकते हैं, other organisms which are adapted to that particular environment. When outside से हमने अपने higher temperature पर water release किया उस water body में, the water temperature will, the survival of those particular organisms in that particular water body will become difficult, right? That is how you have to see. So let us see
the explanation part, how you can relate it. ये कुछ एक factors हैं, those have been mentioned which can lead to thermal pollution. One of them is water as a cooling agent in the thermal power station, या बोल सकते हैं nuclear power station. Power station में as you know as a coolant जो है हम water use करते हैं. There your power plants use water as a coolant and release hot water जो circulate होने के बाद at a higher temperature पे हम क्या करते हैं, we release that into the nearby water body. So उस केस में temperature this reduces. अच्छा एक और चीज, okay, one is that overall उस water body का it is going to increase the temperature, right? The other part is that when the temperature of the water body increases, then the dissolved oxygen वो भी क्या होगी, that will also get reduced. So double impact है. एक है कि आपने जो environment है ecosystem का that got changed. The other one is that you have this decrease the dissolved oxygen, because as the temperature will increase, dissolved oxygen will decrease. So that way also you have influenced that particular this ecosystem और उस water body को influence किया. Another reason of thermal pollution, that means what is other impact of, like you can say जो हो सकता है, sorry, let me just repeat it. जो thermal pollution का other reason हो सकता है soil erosion. See what happens is soil erosion, और एक और वहां पर mention किया था, let me just relate it to you, called as siltation. Soil erosion and siltation of water bodies, they are both are related. When we say soil erosion का मतलब हुआ कि एक एरिया से soil erode हुई and it got deposited in the other area. So let us say water body है, तो किसी एक particular area से when the erosion took place, this erosion, after the erosion this soil got settled in that water body. तो जो settling of the soil है in the water body उसको बोलते हैं siltation, right? तो ये basically दोनों क्या हैं, they are the more or less you are having the same interpretation रहेगी इसकी. So let me just explain you over here. So one of the reason could be like soil erosion. जब soil erode होगी obviously from a particular area, then it may be carried by water to that water body, and when it is carried to the water body, water level will increase. So when the water level will increase, then obviously what will happen, more of the sunlight will be, that water will be exposed to more of the sunlight. When the water will expose to more of the sunlight, then obviously क्या होगा, जो temperature है that will increase. When the temperature will increase, so obviously we will say that it has got thermally polluted, right? So consistent soil erosion causes, soil erosion हुआ, deposition चलती गई दूसरे एरिया पे, causes water bodies to rise. shallow हो गया तो अब क्या है, water जो sun rays हैं they can penetrate easily and therefore larger amount of heat is getting absorbed in that water body. When it is happening, then obviously you can say that thermal environment change हो गया, making them more exposed to sunlight, right? So obviously this may also give rise to anaerobic conditions, that is reduced aerobic. हमने कहा था earlier last video में discuss किया aerobic. So aerobic related to oxygen है, anaerobic reduced level of oxygen, anaerobic condition reduced oxygen level obviously होगा. अच्छा, one of more reason is the deforestation. Deforestation basically that is obviously deforestation will take place, this will lead to soil erosion, right? किसी एक एरिया में डिफोरेस्ट हो गया, soil erode होगी इसलिए, that will get deposited. Then obviously deforestation also lead to soil erosion, then indirectly also lead to thermal pollution. Then you are having surface runoff from the paved surfaces. Paved surfaces का मतलब हुआ कि cemented surfaces, and let us say, so for example in the summers when they get heated up, obviously if it rains then it is carried away and therefore it is going to increase the temperature of the nearby water body. Same way natural causes में you are going to have like volcanoes हो गए, geothermal activity होगी, right? All those volcano तो obviously क्या, magma, hot magma comes out, तो obviously क्या हो सकता है, that can raise the temperature of the water body if it is nearby, right? Geothermal activity है, subsurface activity है, वहां magma की activity चल रही है आपकी, let us say, so that water body may get heated up. So उस case में that may lead to the warm lava may raise the temperature of the water bodies, right? So wherever that geothermal activity is taking place, and therefore in that area obviously you may have like geysers, thermal geysers जब हम बोलते हैं, then geothermal energy you may have studied, right? तो geothermal energy में क्या होता है, आपका जो टैप है होता क्या है, इनसाइड सरफेस में you are having like geothermal energy है, लावा और मैग्मा की फॉर्म में, वो क्या है, that is heating up the water inside the surface and then this heated water is coming out, right? तो वो क्या है, that is obviously, तो same way if nearby or water body है or some kind of such geothermal activity is taking place, that can also lead to the increase in the temperature of the water body, and therefore we can say that it can lead to
thermal pollution. Just now have a look over here. Use of water as a coolant, obviously. चाहे thermal power station हो, maybe nuclear power station, you're using as a coolant. Soil erosion, siltation of the water body. These both are obviously. Soil erosion हो रहा है तो obviously siltation का भी होगी water bodies की दूसरे एरिया पे जाके. Then इसका मतलब हुआ कि all of these statements are correct. Now have a look on this particular question. Which of the following statements regarding the water harvesting is not correct? Right. So just go through it and try to find out. It helps to recharge the groundwater. It provides water when a drought occurs and can help mitigate. Mitigate का मतलब reducing, removing flooding of low-lying areas. And water harvesting is not practiced in India. Rainwater harvesting is common in many parts of the arid parts of the Rajasthan. So you need to understand the meaning of first. So what is the rainwater harvesting, right? So rainwater this is when we say water harvesting, it normally हम बोल देते हैं कि it is basically the rainwater harvesting. General sense उसकी यही निकलती है. तो when we say water harvesting, it simply means that utilizing the rainwater, right? Whenever it rains in that particular area, उस water को utilize करें, store करें, and then so that later जब आपने बात when there is a scarcity of water at the different period of time, उस वक्त क्या so at that particular point of time you can utilize that particular water. उसको हमने बोल दिया water harvesting, right? So purpose कुछ भी हो सकता है. For example, if it rains, as you know, India के context में is more relevant because in the monsoon season you are going to have in these 3 months you are going to have the maximum rainfall, and the most of those remaining months of the year, almost 7-8 months, you don't have sufficient rainfall. So if, for example, in those areas where you're having a scarcity of water, you can utilize that particular water, store that particular water, and then utilize in the remaining dry season, right? तो वो जो है practice उसको हमने नाम दिया है rain water harvesting बोल सकते हैं. We call it simply as a water harvesting. Obviously, for the different applications, for example, you can use it for drinking purpose, you can use it for agriculture practices, you can use to increase the soil moisture, or maybe some kind of other activities you can utilize that particular water. So simply water harvesting, I have just made it bold. Water harvesting is the accumulation and storage of rainwater for reuse on site, उसी जगह पे, rather than allowing it to run off. इससे पहले कि वो बह जाए, you just store it and utilize it. ये पर्पस हो सकते हैं. ड्रिंकिंग पर्पस, इरिगेशन हो सकता है, increase groundwater recharge also. As you know, we are withdrawing the water from the subsurface for our drinking water needs or maybe other purposes also. Water table नीचे जा रहा है, तो उस period में if we give sufficient chance for that water to go inside, तो water table भी क्या होगा? That will come up. And reduce storm water discharges, urban floods and overloading of sewage treatment plants. Obviously क्या है, उस वो जो रेन वाटर को आप क्या कर रहे हो, हार्वेस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ वाटर दैट गोज इनटू द ड्रेन्स दैट विल आल्सो रिड्यूस. व्हेन दैट विल रिड्यूस, ऑब्वियसली तो जो सीवेज है जिसके थ्रू जो पानी जाना है, फ्लडिंग कम होगी, या डिस्चार्ज होना है उसका पाइपलाइन जो डिफरेंट सीवेज सिस्टम या आप बोल सकते हो जिसके थ्रू आपका पानी ड्रेन करते हो आप इन योर लाइक सिटीज एंड ऑल दैट, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो इनडायरेक्टली देयर आल्सो इट इज गोइंग टू. So different techniques हैं. Just have a look over here. एक आपका you're having rainwater harvesting system is more popular, very popular. जो rooftop पे उस पानी को जो हमने किया, utilize किया, टैंक है नीचे, you're having surface tank, उस वाटर को फिल्टर सिस्टम के थ्रू जो you allow it to do go inside that, और उस वाटर को टैंक को you can utilize for the different application later on, right? आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, और हो सकता है अगर एक और टैंक बनाया है आपने यहाँ पर, उसको कनेक्ट किया, तो जो एक्स्ट्रा पानी है, इफ वंस इट गेट्स फिल्ड अप व्हेन इट रेन्स, सो वो भर जाएगा, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए यूज कर सकते हो. दैट इज हाउ इट इज, राइट? एंड यू आर हैविंग मेनी एग्जांपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. फॉर एग्जांपल राजस्थान में बात करोगे, यू आर हैविंग डिफरेंट एरियाज, common tanks in tankas, like these tanks, right? उन एरियाज में, फॉर एग्जांपल राजस्थान वाले एरियाज में, ड्राई एरियाज में, यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ टैंक्स, राइट? जिसको हमने नाम दिया टंकास बोल लो या अंडरग्राउंड टैंक्स हैं. वेरी कॉमन प्रैक्टिस बिकॉज दिस इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड दिस एरियाज यू फाइंड लाइक राजस्थान इन एरियाज में पलर पानी बोलते हैं आप रेन वाटर को. दैट इज हाउ यू हैव टू. एंड ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान यू आर हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम्स कॉल्ड एज खडीन्स इन जैसलमेर. फॉर एग्जांपल आपने क्या, नॉट ओनली टू स्टोर दैट वाटर एंड ड्रिंकिंग और पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए ऑल्सो यू हैव लाइक बंड ऐसे तैयार कर दिया, स्लोपी एरिया है, बंड तैयार कर दिया, पानी को यू अलाउड दिस वाटर टू स्टे ओवर हियर एंड धीरे धीरे पर्कुलेशन के थ्रू नीचे चला जाएगा. सो इसका मतलब मॉइस्चर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट इज अनदर सिस्टम ऑफ लाइक यूटिलाइजिंग. सो सच काइंड ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज खडीन्स इन जैसलमेर. जोहर्ट्स देखो, यू कैन हैव, दिस इज द जोहर्ट्स.
in Rajasthan some area, तो आपने store कर दिया, you can utilize this water for so many other applications when you are having shortage of water in the dry seasons, right? Similar kind of chokka system you are having like in Rajasthan also, similar kind of like this kind of structure you prepare, and therefore जो आसपास का जो you allow this water to stay over here, percolation के through नीचे जाएगा तो obviously moisture content क्या होगा, बढ़ेगा. So this is how. Now also see in the Meghalaya also, in Shillong area you will find the rainwater rooftop rainwater harvesting system in very they are also very common in that area. So that means in different parts of India also you are having the rainwater harvesting system which are already prevalent to utilize this rainwater, right? So now let's go to this statement now. It helps to recharge the groundwater. Obviously आप क्या करोगे, टैंक बनाया आपने तो obviously you will allow that water, you are giving the chance to that water to percolate down, धीरे धीरे जो नीचे जो है चला जाएगा वो, and therefore water table क्या होगा, ऊपर आएगा. Correct? This means this statement is correct. Now let's see the next statement. It provides water when drought occurs and can help mitigate flooding of low-lying areas. Obviously see, अगर आपने see, rainwater harvesting simply does not mean कि आपने जो है you have made the टैंक नीचे टैंक किया. फॉर एग्जांपल स्लोपी एरिया में क्या करो, फॉर एग्जांपल यू हैड ए खड़ी, जो एग्जांपल मैंने दिया, तो इस तरह के बंड्स आपने तैयार किए. सो ऑब्वियसली क्या, व्हेन यू हैव मल्टीपल बंड्स यू हैव क्रिएटेड, तो जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर फ्लडिंग हो ही नहीं पाएगी, बिकॉज वहां पर क्या है, यू आर अलाउइंग दैट वाटर टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन. तो जो पानी नीचे जाएगा लो लाइंग एरियाज में, दैट विल गेट, जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, देयरफॉर लो लाइंग एरियाज की जो फ्लडिंग है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. दैट मींस इट प्रोवाइड्स वाटर व्हेन ड्राउट अकर्स. सो अगर आपने पानी स्टोर किया, फॉर एग्जांपल इनको बंड्स बोलते हैं, उनमें भी तो ऑब्वियसली क्या होगा, फ्लडिंग तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू अवॉइड, बट एट द सेम टाइम आपका जो पानी है वो ड्राउट लाइक कंडीशन जो बाद में होनी होगी, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, वो जो है वो अवॉइड हो जाएगी. Water harvesting is not practiced in India. I have already given you many examples. I have shown you that is we already practiced. Rather, in the dry areas of India, we were already practicing for so many years, hundreds of years. Already हम practice कर रहे हैं. हम अभी क्या कर रहे हैं? We are simply reviving them because that practice had been lost. अब जो है हम धीरे धीरे दोबारा, because we have realized now that that was a good method, so now we are promoting it again. So that means this is not the correct statement. Rainwater harvesting is common in many arid parts of the Rajasthan, not only Rajasthan, but in other areas of country also. I gave you an example of Rajasthan. Oh, sorry, Meghalaya. Meghalaya, the capital of Meghalaya is Shillong. Even though they get the sufficient rainfall, very high rainfall in the monsoon season, but because it's a hilly area, most of the water drains away. But still, it means when the dry season comes, they don't have sufficient water. So they already do this kind of practice of like making tanks, underground water tanks, to store the rainwater so that that water can be utilized at the later period, right? So that is how you have to address this kind of question. So ये नाम important है, ये ध्यान रहे. खडीन्स कहाँ है, जोहर्स कहाँ है, चौका system कहाँ है, right? And something that way that you must need keep in mind, like with respect to rainwater harvesting systems. Now let's see another question. What okay, just go through this question and try to answer by pausing the video. Let me just read it out, this question to you. Consider the following statements. Watershed management represents a sustainable approach for the resource conservation. I hope you know the meaning of sustainable. Anything which you are consuming, you are using natural resources का use कर रहे हो. If you use it in such a way that future generation are able or also able to utilize the get the benefit of those resources. It is not that if you have used those resources today, you have consumed all those, then it is not the sustainable. Sustainable sustain कर सको for a longer period of time, right? Watershed management boosts the income of the local communities. Watershed management regenerates the water and land resources. Okay, rather these two statements are related. If you are able to regenerate the water and land resources, then obviously you can boost the income of the local communities. Which of these are correct statements? I'll just take you through the brief introduction of the watershed management. Watershed क्या होता है, and then I think we can answer it very easily. So I hope you understand the meaning of watershed. Let us say, for example, this is a river Ganga. You are having many tributaries of this river Ganga, right? Left hand and right hand, and this is a river basin. Ganga river basin हम बोल सकते हैं. ये पूरा Ganga large river basin बोलते हैं हम इसे. And these are different small rivers which are joining it. So let us say again, it is another river which is joining this, and it is having small streams which are joining it. So when we take this small region, जिसमें क्या हो रहा है आपका, all the
that means all the streams which are feeding into this small river, तो उसको हमने नाम दे दिया कैचमेंट एरिया, और इसको हम बोले वाटरशेड बोल देते हैं, या हम बोलते हैं स्मॉल बेसिन. So basically when we say that what is watershed, तो watershed is a small basin or small catchment area. This is a large basin, difficult to manage because it spreads across different states, right? गंगा है आपकी बहुत सारी स्टेट से आती है, मैनेज करना डिफिकल्ट है अगर आप रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहते हो. तो हमने किया व्हेन वी टेक ए स्मॉल स्ट्रीम और एरिया वेयर जो सारा उस पर्टिकुलर आसपास की जितना भी पानी है उस पर्टिकुलर एरिया में ड्रेन होता है, तो हम बोलते हैं उसको कैचमेंट, स्मॉल कैचमेंट एरिया, राइट? कैचमेंट का मतलब है जो पानी है उसके आसपास का वो सारा उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में ड्रेन हो रहा है, तो उसको हमने नाम दे दिया है कैचमेंट, स्मॉल कैचमेंट और स्मॉल बेसिन. तो नॉर्मली ये लार्ज बेसिन है, दिस इज लार्ज बेसिन, राइट? So it is generally implies a small catchment of basin with upper area limit of this. So ये जो एरिया हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं so that इस एरिया इज नॉट लिमिट जो पर क्या है 2000 किलोमीटर स्क्वायर. सो व्हेन वी से वाटरशेड और स्मॉल बेसिन और कैचमेंट एरिया, इसका मतलब ऑल द एरिया, उस एरिया में सब कुछ है आपके, यू आर हैविंग ऑल द स्ट्रीम्स भी हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी हो सकती हैं. इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, लेट मी जस्ट मेक इट मोर क्लियर टू यू, राइट? सो फॉर एग्जांपल दिस वन, तो मैंने एक छोटी सी स्ट्रीम ली जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी बोलते हैं हम इनको. सो इस ट्रिब्यूटरी में भी इसके आसपास से जितना भी व्हाटएवर द वाटर कम्स दैट गेट्स, इसका मतलब है ये जो छोटी स्ट्रीम है इट इज कैचिंग ऑल द वाटर ऑफ दिस एरिया, इसलिए हमने नाम दिया स्मॉल कैचमेंट एरिया और स्मॉल रिवर बेसिन. ये लार्ज रिवर बेसिन हो गए, बड़ी रिवर है, लार्ज रिवर बेसिन है, तो स्मॉल रिवर बेसिन और स्मॉल कैचमेंट एरिया उसको बोलते हैं वाटरशेड. अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर वाटरशेड को जो नाम दे दिया, इसके रिसोर्सेज को एज ए यूनिट हम कंसीडर करके कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं, इसलिए नाम आया आपका वाटरशेड मैनेजमेंट. दैट मींस ये जो एरिया है, छोटा एरिया मैंने चूज किया विच नॉर्मली जिसकी एरिया लिमिट जो दैट डज नॉट एक्सीड दिस, वी से वी वांट टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज इन दिस एरिया व्हिच वी कॉल इट एज वाटरशेड, तो हमने उसको नाम दे दिया वाटरशेड मैनेजमेंट. मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज इन दिस एरिया को नाम दे दिया हमने वाटरशेड मैनेजमेंट. नाउ सी ये सेम ही है, फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रीम है, उसको ऑल जो ट्रिब्यूटरीज है, सारा पानी जो अगर मान दिया यहां पर, इफ देयर इज अ रेनफॉल इट इज गोइंग टू ऑल कैच ऑल द वाटर व्हिच इज ड्रेनिंग दिस, राइट, थ्रू डिफरेंट. तो इस पूरे एरिया को मैंने नाम दे दिया स्मॉल कैचमेंट और वाटरशेड. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट? वाटरशेड मैनेजमेंट रेफर्स टू व्हाट? To sustain and hence watershed function of that particular affected plant, animal, human commitments and all this. So simple term है, if you want to talk about watershed management, जितने भी रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, यू आर हैविंग मिनरल रिसोर्सेज हैं, एनिमल रिसोर्सेज हैं, whatever the resources that you are having in this small area, if you are going to when you are managing all those resources in a sustainable way, long term basis पे, then we say this is watershed management, right? See, is to protect, maintain and restore water quality. Also obviously water quality also become water also major water. The main purpose of watershed management is to protect, maintain and restore the water quality in our watersheds through the integrated and holistic effort. कि हमने जो isolated way में जो इसको नहीं देखना है, holistic, because everything is dependent on everything else. This is the motto, right? Now ये advantage है आपको that you are going to get. Why watershed management की जरूरत क्यों पड़ती है? See, I hope you understand why we don't study the whole of that. मैंने आपको large river basin से गंगा का पूरा बेसिन की बात की. Why we don't study it as a whole? We cannot study it as a whole. Study कर सकते हैं, but we cannot manage the resources because there are so many states involved, right? So many states, so many governments, so many departments that will be involved. तो उनको मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाए. तो हम क्या करते हैं, छोटा एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, इंडिविजुअली बहुत सारे वैसे कैचमेंट एरिया मैंने आइडेंटिफाई कर दिए. दैट वे डिफरेंट वे सॉरी उन डिफरेंट स्मॉल कैचमेंट एरियाज को व्हेन आई विल स्टडी इंडिपेंडेंटली एज इन अ होलिस्टिक वे, सो दैट वे मैं उसके रिसोर्सेज को बड़े अच्छे से मैनेज कर सकता हूं. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, राइट? See the advantages. Harmful impact of the system can be identified quickly. Prevention, remediation, improvements can be done and carried out. That means holistic way में उन resources को study करूंगा, so I'm going to get the lot of benefit in that particular area, right? It can prevent future community water shortages, right? Let us say आपको जो water की दिक्कत चल रही है उस एरिया में, वाटर पोल्यूशन की दिक्कत चल रही है, सो व्हाट विल डू, विल ट्राई टू वाटर की दिक्कत चल रही है, वाटर शॉर्टेज की चल रही है, वाटर पोल्यूशन की चल रही है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई दिस पोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस. इज दैट पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ द सम नियर बाय एरिया फ्रॉम वेयर दैट सीपेज इज टेकिंग प्लेस एंड पोल्यूटिंग दिस वाटर, or maybe deforestation has taken place in that somewhere upland,
दैट डिफोरेस्टेशन का पानी जो है वो क्या कर रहा है, इजिली आ पा रहा है, उसको पोल्यूट कर पा रहा है, या सिल्टेशन की दिक्कत चल रही है बिकॉज ऑफ द डिफोरेस्टेशन, ऑल दोस. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल दोस एरियाज व्हाई दैट थिंग इज हैपनिंग, एंड देन वी आर गोइंग टू टेक द करेक्टिव मेजर, राइट. So water, so that way water shortage, so we are going to improve that quality also. Increases the production and income of the watershed community. कैसे? For example, if let us say pollution की, water pollution की दिक्कत चल रही है या water shortage की दिक्कत चल रही है, just because आपने वो रन ऑफ ज्यादा हो रहा है, डिफोरेस्टेशन कर दिया आपने. So if for example if you identified, उसको स्टडी करने के बाद कि डिफोरेस्टेशन इज द मेन कॉज, तो आपने क्या फोरेस्टेशन की, रिफोरेस्टेशन की. अगर रिफोरेस्टेशन की तो अब क्या होगा, आपको जो है पानी जो है वो दैट मीन्स यू आर एबल टू, दैट मीन्स रन ऑफ जो है वो कम हो जाएगा, देन ऑब्वियसली उसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, बढ़ेगा. एंड हो सकता है आपका क्या है, दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े. व्हेन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल टेक प्लेस, तो इनकम क्या हुई, बड़ी. रिफोरेस्टेशन की, जो प्लांट से, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से उसका भी बेनिफिट आपको मिला. सो क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इनकम. मिटिगेट्स द ड्रॉट्स एंड फ्लड्स. अगेन सेम थिंग, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स एज आई टोल्ड यू. फॉर एग्जाम्पल डिफोरेस्टेशन हो गया तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली डिफोरेस्टेशन की तो आप उसको भी अवॉइड कर सकते हैं. इंक्रीजेस लाइफ ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड डैम रिजर्वायर. सिल्टेशन है, मान लिया सिल्टेशन हो रही थी तो डिफोरेस्टेशन कर दी तो सिल्टेशन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी. हेल्प इन रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर लेवल्स. ऑब्वियसली हमने आइडेंटिफाई किया कि ग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है. व्हाट इज द रीजन, सो मे बी यू मे बी हैविंग दैट, आप जो है वो रन ऑफ को, दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग का अडॉप्ट नहीं किया है आपने, रन ऑफ ज्यादा हो रहा है. तो इफ यू गो फॉर द वाटर हार्वेस्टिंग तो वाटर टेबल क्या होगा, ऊपर होगा. ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगी. जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स आर आल्सो मेट, रन ऑफ की रिक्वायरमेंट, सॉरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ेगी तो ओवरऑल इनकम भी बढ़ेगी. दैट इज हाउ यू हैव टू सी. सो रिचार्जिंग द अंडरग्राउंड वाटर, रिचार्ज मतलब लेवल जो है अंडरग्राउंड वाटर का बढ़ाना, सो दैट यू कैन मीट देयर वाटर रिक्वायरमेंट्स इन द ड्राई सीजन. इकोलॉजिकल इंबैलेंस कैन बी अवॉइडेड. इकोलॉजिकल इंबैलेंस मतलब बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, उस इकोसिस्टम पे, उस वाटरशेड के आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. सो ये कुछ एक बेनिफिट्स हैं दैट यू कैन जस्ट थिंक ऑफ व्हेन वी मेक यूज ऑफ द वाटरशेड अप्रोच एंड वाटरशेड मैनेजमेंट जब हम करेंगे. नाउ सी ओवर हियर, watershed management represents a sustainable approach for the resource conservation. Obviously what we are doing, we are conserving the resources. water resource था, water table नीचे चला गया, अगर आप consume करते गए then water table will go further down and then obviously one day it may get depleted, right? So क्या है, you are conserving that resource. So you are basically sustainable, long term basis पे sustain कर रहे हो उस particular resource को. boost the income of the local communities. ये मैंने already we have discussed example मैंने ले लिया आपके लिए. Watershed management regenerates water and land resources. Rather, when you will regenerate, revive करोगे उन resources को, land को, land लेने से dry होगी है, right? या आपके land resources और water resources उनको regenerate किया तो obviously क्या है? This is also leading to this. इसका मतलब हुआ कि all of these statements are going to be the correct statements. Let's now see the final question on this. With reference, just go through this particular question and try to answer by pausing it. With reference to the water logging, consider the following statements. Irrigation without proper drainage of water leads to water logging in the soil. And the second one is, beside affecting the crops, water logging increases the soil salinity. So which one of these statements are correct? See, you need to know the meaning of water logging. Water logging है क्या? Water logging का मतलब पानी का इकट्ठा हो जाना. As simple as that. पानी इकट्ठा हो गया एक पर्टिकुलर लोकेशन में, और इस केस में व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ लाइक एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें, व्हेन यू आर टॉकिंग द एग्रीकल्चर फील्ड, सो इस केस में व्हेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन द पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड एंड स्टे देयर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसको मैंने लॉन्ग वाटर लॉगिंग बोल दिया. यू आर नॉट गोइंग, इसका मतलब है यू हैव नॉट प्रोवाइडेड प्रॉपर ड्रेनेज. जो पानी आया वो दैट स्टेज फॉर ए लॉन्गर पीरियड, बट अगर आपने जो उसको ड्रेनेज दी होगी तो ऑब्वियसली जितना आपका अब्सॉर्ब होना अब्सॉर्ब हो गया, रेस्ट में बी कैरिड अवे, वहां ड्रेनेज के थ्रू निकल गया. बट सो जस्ट हैव ए थोड़ा सा, लेट्स हैव ए एक्सप्लेनेशन पार्ट. सो दो एरियाज में, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाटएवर वी हैव मेंशन्ड ओवर हियर. वन इज दैट, सी जो कोस्टल एरियाज में हैं, उन कोस्टल एरियाज में लैंड लेट अस से नियर बाय एग्रीकल्चर फील्ड है, तो ऑब्वियसली एज यू नो कोस्टल एरिया में यू गोइंग टू हैव ए, लेट अस से ये एग्रीकल्चर फील्ड है, ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया है. तो एग्रीकल्चर फील्ड के नीचे यू आर हैविंग फ्रेश वाटर. कोस्टल एरिया जो बिल्कुल आपका यू आर हैविंग बैंक और यू कैन से शोर लाइन है, वहां पर यू आर गोइंग टू हैव दैट पर्टिकुलर सॉल्टी वाटर. नाउ लेट अस से आप यहां से पानी ज्यादा विड्रॉ कर रहे हो,
फ्रेश वाटर ज्यादा विड्रॉ करे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये धीरे धीरे सीपेज के थ्रू क्या होगा, ये जो दिस सॉल्टी वाटर दैट विल गेट इंट्रूडेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो एक्सेस अगर यूटिलाइज कर रहे हो फ्रेश वाटर यहां से एग्रीकल्चर फील्ड से, तो हो सकता है दैट सॉल्टी वाटर में गेट इंट्रूडेड एंड देयरफॉर सॉल्टी वाटर में बी विड्रॉन एंड देयरफॉर सरफेस पे आ जाएगा, एंड देयरफॉर सरफेस के ऊपर आएगा, देन ऑब्वियसली सॉल्टी वाटर, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा वहां पर जम जाएगा, दैट मींस इट विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर, जब इवेपोरेशन होगी तो, राइट। वन एरिया ये है जो आपने देखना है। द सेकंड वन इज एक्सेस इरिगेशन करते हो, बहुत ज्यादा पानी आप यूज कर रहे हो, एंड दैट टू पर्टिकुलरली व्हेन दैट वाटर कैरीज एक्सेस सॉल्ट्स। अगर वो सॉल्ट जो है वो क्या कर रहा है, इफ इट इज कैरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, तो क्या होगा, तो व्हेन दैट वाटर विल इवेपोरेट तो सॉल्ट विल गेट डिपॉजिटेड इन द ऑन द सरफेस, राइट। ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, आपने ज्यादा पानी यूज किया और सॉल्ट्स विल गेट डिपॉजिटेड, एंड दैट वे क्या होगा, आपकी सॉइल क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम सलाइन, एंड सलाइन सॉइल इज नॉट गुड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, राइट। उससे क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। अब ये चीज आपने अवॉइड करनी है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू इंप्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्या करो, जो सलाइन वाटर है, पानी को ड्रेनेज, दैट मींस प्रोवाइड द प्रॉपर ड्रेनेज, जितना पानी चाहिए उतना दो, इफ एक्सेस है तो ड्रेनेज होनी चाहिए ताकि एक्सेस वाटर दैट शुड गो आउट, right, and therefore such kind of situation should not occur because of the evaporation, and in the coastal areas जहां पर आपकी ये दिक्कत है, there excess जो विड्रॉ कर रहे हो वाटर, तो आप क्या करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करके फ्रेश वाटर का लेवल क्या करो, रिस्टोर करो। these are the some steps that you can take in this regard. So let me just the same thing has been explained over here. Let me just take you to the back to the same question. With reference to the water logging, consider the following statements. Irrigation without proper drainage of water leads to water logging. Rather water logging टर्म वहीं से आया, एक्स्ट्रा वाटर, ज्यादा वाटर आप यूज कर रहे हो तो क्या करेगा, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं दिया है तो पानी स्टे कर रहा है ज्यादा पीरियड के लिए, दैट मींस इट इज लीडिंग टू स्टेइंग ऑफ दैट वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिसाइड अफेक्टिंग द क्रॉप, क्रॉप प्रोडक्शन आपकी कम होगी उससे, राइट, बिकॉज वाटर लॉगिंग होगी, देन बिकॉज वाटर लॉगिंग इंक्रीज द सॉइल सैलिनिटी, सॉइल क्या हो जाएगी आपकी, सलाइन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बिकॉज व्हेन वाटर विल स्टे ओवर देयर इवेपोरेशन विल टेक प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन सॉल्ट्स विल गेट डिपॉजिटेड, देन इनडायरेक्टली क्या होगा, जब सॉल्ट सॉइल जो है सॉल्टी हो जाएगी, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, देन ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द क्रॉप आल्सो। सो दैट वे यू कैन से these both of these statements are correct, right? So that means the C is going to the correct answer. So that is all these 10 question in the previous video, 5 video previous video में discuss किए, 5 in this video. So in the subsequent videos also we will be coming up with the this that is expected questions from the exam point of view, and also the concepts related to those questions. Till then, bye, thank you.